Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. We'll just wait for a couple of minutes and then we should be good to go with today's mid-market session. Wait for a couple of minutes. Okay, Dinesh ji, Suresh ji, Moti ji, good afternoon. Sanjeev ji, good afternoon to you as well. Audible and visible. Okay, perfect. Raji, good afternoon to you. I hope you all had a great weekend. Dinesh ji, audio, video clear. Okay, perfect. We'll just wait for another 20-30 seconds and then we should be good to go with today's live session. Shrikant ji, hi, good afternoon to you as well. Okay. So again, not a great day for our markets. We are again down around 160 points. And we have also dropped below the 100-day EMA of 25,625. The level that Nifty had held on to for the last 4-5 sessions now. Nevertheless, so let us start off with the mid-market session. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट से. अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स फ्राइडे को डाउ जोन्स 0.17% नीचे क्लोज हुआ. नैस्डैक भी 0.06% नीचे क्लोज हुआ और S&P 500 also closed 0.06% lower. So all the three indices closed lower, in Friday's session. If we look at the Dow futures is down around 0.69%. So we can expect a slight negative start for the US markets today. Frankly, we didn't have a good weekend. I think so we have seen almost everything. I thought after COVID, that's the I think इसके बाद मुझे लगा था शायद इसके बाद और कुछ बुरा नहीं हो सकता है. या और कुछ देखने को बाकी नहीं रह गया कोविड के बाद. बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प हैज प्रपोज्ड टू बाय ग्रीनलैंड फॉर $700 billion to protect, I think, national security interests के लिए. So I think that is the news now, and he has slapped tariffs on all the EU members, those who are opposing his plan to buy Greenland. So I think now even the EU is also contemplating to pull out of the trade deal now, and a lot of European nations are kind of against US pressurizing to buy Greenland. So US wants to have their military base there, and also not for minerals, because I think Greenland, if you see, they also have rich minerals as well. I think uranium, iron, all those are available in Greenland, and also, but I think it's between North America and Arctic, so they are probably going to use that for military purpose there. So I think that's a new development, because of which I think the geopolitical tensions have also intensified now. But if you look at the European markets, they are also under pressure. So Germany closed around 0.2% lower. London is down 0.04% lower, while France is down 0.65% lower. If you look at the Eurostox index, that is down around 1.8%. So I feel it was between India and US now. I think even it's between Europe and US also currently, considering how things have been moving here. And this geopolitical tensions are, I think there is no stopping to it. I think we just thought post Venezuela, I think there is also tensions going between US and Iran. I think Israel has said, they are not going to fight without US support. There's a trade deal hanging in balance between India and US. There's a budget that is going to come in the next 2 weeks now. There's a trade deal happening between India and US. US is trying to acquire Greenland. US is having their own set of issues with Iran now.
US has slapped tariffs on all the European nations that is opposing US plans to acquire Greenland. So it's all pretty messed up. Plus, there is I think an event that is happening in Davos, that's in Switzerland. I think Donald Trump is going to speak there. I think Donald Trump even got a Nobel Peace Prize. I think he has kind of got the Peace Prize from the Venezuela opposition leader who actually won the Nobel Peace Prize. So there's a lot happening on the geopolitical front. So I think that is something. So we'll have to look at what Trump says in the Davos meet now. If you look at the Asian markets, even Asian markets are under pressure. Nikkei is down 0.65%. Hang Seng is down almost 1.12%. Shanghai is mildly positive. It's up 0.21%. Kospi again continues to do well. It's up around 1.3%. I think Kospi is on a dream run. Last year they had a dream run. In 2026 they are off to a flyer. They are up around 21% in just the last 1 month. I mean, crazy move in Kospi. I think it is almost, you can see the difference between Kospi and the other indices. That's pretty vast. If you see, Kospi is up around 22%, while the next best index is around Nikkei, which is up around 8.2%. Whereas Nifty is the worst performing global index. We are down around 1.4% here. And honestly, the earnings that we have seen from the banks and IT as well as Reliance have not lived up to the expectations. In fact, उम्मीद था कि quarter three numbers काफी strong आएंगे, but the quarter three numbers have been almost average. It's not very good as compared to what the expectations were. IT again, muted set of numbers. Reliance again had a muted set of numbers. HDFC, ICICI Bank as well. So all the major heavyweights have announced their results now. And Nifty again, it's down around 0.68%. S&P, Sensex is also down around 0.57% here. So clearly we've been underperforming since the last 1 month or so. If you look at the macro indicators, a lot of new developments in the macro indicators front. If you look at the dollar index, so dollar index still continues to stay below the 200-day EMA mark. I think around 99.20, 99.5 एक strong resistance होगा dollar index के लिए. जब तक dollar index इसके नीचे, it is a good sign, but any move above 99, it's going to put pressure on our markets. Look at dollar by rupee, guys. अगर ऐसा होगा तो कैसे FIs आएंगे Indian markets में? Dollar by rupee is at 90.9. We are again hitting the previous high of 91. Despite all the RBI intervention where we thought, okay, fine, abhi to at least dollar yahan se girega. But I think dollar has again kind of strengthened against the rupee. We are almost hitting the 91 mark here, and this is not a good sign. Dollar appreciating against the rupee is not a good sign for the markets. Look at the US government bonds 10-year yields. I think GAB consolidate kar raha tha, and yields have kind of spiked up. So obviously when the yields are attractive in the US markets, and plus even Japan is going to announce their interest rate decision this Friday. So Japan is going to hike their rates. That's what the market consensus is. So ho sakta hai wahan pe yields badhega. And I think even the yields have gone up in the US markets as well. If you see, US government bonds 10-year yields have spiked up to 4.2%. So if you are getting risk-free returns, better risk-free returns in US and Japan, why do you want to invest in equity markets? That is usually how the foreign investors think. So yields, US government bonds, 10-year yields going up again, it's not a good sign for our equity markets. Silver continues to move up. It hit a high of $94 an ounce. Like I said, dollar ko bhi par kar diya hai. I think soon it is going to par the dollar index as well. So silver is on a dream run. I think around $86 an ounce is where the support is for silver. India VIX again, clearly we can see that bulls को आज clearly एक discomfort नजर आ रहा है. अगर हम India VIX देखें, that is up around 4.8%. अब usually आपको VIX बढ़ते हुए दिखेगा जब तक बजट का speech नहीं होता है. Probably in the next 2 weeks, our markets are likely to be volatile. That is what the historical trend shows. बजट डे और बजट डे के एक हफ्ते बाद तब जाके विक्स में थोड़ा कूल ऑफ देखने मिलेगा, बट तब तक we can probably have wicks going up here. But the immediate resistance for India VIX is around 12.2. I think any move about 12.2 is likely to put pressure on our markets.
The only silver lining for us is that crude oil prices haven't gone up. अगर हम crude oil prices देखें, we hit a high of $67 a barrel और वहां से थोड़ा correction आया है. But I think any move above $67 a barrel is again going to put more strain on our economy. Or so I think all eyes will be on the union budget now. Even if you look at the Japanese 10-year yields, again, it has hit a fresh high, 2.26%. So Japanese 10-year yields are probably, it has kind of broken out. Even US 10-year yields have kind of broken out. If you look at Indian 10-year yields, that is also at the highest point here. So probably I feel bond market is slightly better placed, compared to the equity markets at the current juncture now, considering the fact that the yields are kind of attractive in US, Japan, as well as India. India, I think 6.7% is where the resistance is. And I think if you look at gold, even gold has probably hit a fresh high. You can see gold prices going up. Obviously, when there is geopolitical tensions around, usually people flock to gold. Gold has hit an high of $4,690 an ounce. And even that is likely to move higher with around 4,540, 4,550. That is likely to act as a strong support for gold here. If you look at the FI positioning, FIIs का भी clearly अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते they've been like heavy sellers in the cash market. Look at that selling in the last 5-6 sessions. 3,300 crores, 3,700, 3,600, 1,500, 4,700, 4,346. Every day they've been selling around 3,000, 4,000 crores in the cash market. अगर पिछले 6 दिन देखे तो ऑलमोस्ट 21,400 करोड़ तो सिर्फ पिछले 6 दिनों में उन्होंने बेचा है. एंड लॉन्ग शॉर्ट रेशो में भले ही थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया था फ्राइडे के सेशन में, हम 7% से 9.3% पर आ गए, बट स्टिल अभी भी 90% शॉर्ट पोजीशंस है एफआईआईस के पास इंडेक्स फ्यूचर्स में और सिर्फ 10% लॉन्ग पोजीशंस है. सो क्लियरली एफआईआईस का सेंटिमेंट कुछ बदला नहीं है. एंड आई थिंक एफआईआईस अब बजट तक रुकेंगे, देखेंगे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज कुछ अनाउंस होता है कि नहीं, वो शायद देखना पड़ेगा. एंड द फैक्ट दैट 4-5 महीने से अब एफआईआईस एक मंदी के माहौल में है, तो ये शायद देखना पड़ेगा कि सरकार कुछ एफआईआईस के लिए कुछ पॉलिसीज उनके फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आती है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा, जो कि होगा 1 फरवरी को. ए टाइम संडे को होने वाला है बजट एंड द मार्केट्स आर ओपन ऑन संडे, दैट इज ऑन द 1 Feb. Now, if you look at Nifty now, so clearly the chart structure has kind of weakened in Nifty. अगर आप Nifty देखोगे पिछले 4-5 सेशन से ये जो 100-day EMA है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था. निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से ये जो 25,600 का जो लेवल था, हमने आई थिंक फ्राइडे के सेशन में भी डिस्कस किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है. निफ्टी ने होल्ड किया, बट आज निफ्टी हैज गिवन ब्रेक बिलो दिस लेवल और हम 25,600 के भी नीचे आ गए. ऑलमोस्ट आज का लो देखोगे आप, हम 25,500 के भी नीचे चले गए थे, 25,494. सो क्लियरली द ट्रेंड इज बेरिश. आरएसआई भी अगर आप देखोगे 40 के नीचे चला गया है, एमएसीडी लाइन भी आपका सिग्नल लाइन के नीचे है, जीरो लाइन के भी नीचे है. सो क्लियरली द स्ट्रक्चर हैज काइंड ऑफ बिकम वीक और हो सकता है अगर ये फॉल कंटिन्यू हो तो शायद हम 200 डे EMA तक आ जाए, जो कि 25,170, 25,200 लेवल के आसपास है. So we can kind of fall back until these levels here. On the upside, I feel जब तक हम 25,880, 25,900 जब तक ये लेवल हम पार नहीं कर देते, बिकॉज आप देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई बना के एक फॉल आया था, फिर निफ्टी ने कंसोलिडेट किया और फिर से अब फॉल कंटिन्यू हो रहा है. सो क्लियरली जब तक हम 25,880, 25,900 पार नहीं कर देते ऊपर की तरफ, तब तक जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश ही रह सकता है. आई थिंक हम 200 डे EMA जो कि एक मेजर सपोर्ट है, जो कि होगा 25,170, 25,200 के आसपास, बट क्लियरली चार्ट स्ट्रक्चर एकदम वीक हो गया है. सो नॉट अ मार्केट टू बी एक्सट्रीमली लॉन्ग, एकदम से बुलिश मार्केट नहीं है ये. आइडली मार्केट्स आपका साइडवेज टू बेरिश हो सकता है, भले ही आपको इंट्राडे में एक अपमूव मिले, बट हो सकता है वो अपमूव सस्टेन नहीं कर पाए. मे बी एक हो सकता है शायद एक 70-80 पॉइंट का नीचे से हमें एक पुल बैक देखने को मिले, बट जब तक हम 25,880, 25,900 के नीचे तब तक ओवरऑल ट्रेंड बेरिश या साइडवेज टू रहेगा निफ्टी में. अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी प्रेटी सिमिलर स्टोरी है. अगर हम सेंसेक्स की भी डेली चार्ट देखें, सो क्लियरली सेंसेक्स भी
ये जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया था, अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। ये भी अगर हम देखेंगे तो एक 100 डे ईए में ऑलमोस्ट होल्ड किया था सेंसेक्स, भले ही वो नीचे ब्रेक किया था, ऊपर गया था, बट आई थिंक इवन सेंसेक्स हैज गॉन डाउन बिलो इट्स 100 डे ईए में नाउ। आई थिंक इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो भी 200 डे ईए में होगा, जो है अराउंड 82,400 के आसपास। अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे सेंसेक्स का क्लोज है अराउंड 83,000, सो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे, दैट इज वेयर द नेक्स्ट सपोर्ट इज। सो अगर 200 डे ये में होल्ड करता है वेल एंड गुड, इफ नॉट आई थिंक हो सकता है शायद और वीकनेस हमें देखने को मिले। और आई थिंक सेंसेक्स में जब तक हम 84,300 मतलब और 1,300 पॉइंट ऊपर, जब तक हमें इसके ऊपर क्लोज नहीं मिलता 84,300, तब तक इवन सेंसेक्स का ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड इज लाइकली टू रिमेन साइडवेज टू बेरिश हियर। सो डोंट अग्रेसिवली गो लॉन्ग्स, भले इंट्राडे में हो सकता है शायद आपको पुल बैक मिले ऊपर की तरफ, बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी इट्स मोर ऑफ अ सेल ऑन राइज मार्केट, जब तक हम 84,300 पार नहीं कर देते ऑन दी अपसाइड। इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक्स का सपोर्ट था काफी टाइम से। आज भी अगर हम देखेंगे देयर आर सर्टेन पीएसयू नेम्स दैट आर डूइंग वेल, बट इफ यू लुक एट दी डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है बैंक निफ्टी अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें, बिकॉज अगर हम मैं एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे है, उसी तरफ बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन होल्ड किया था यहाँ पे 12 जनवरी को, और वहां से धीरे धीरे ऊपर गया। आज भी हम इंट्राडे में नीचे थे, बट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में रिलेटिवली एक लोअर लेवल से एक पुल बैक आते हुए नजर आ रहा है, बट इंट्राडे में ऐसे लग रहा है कि अब शायद थोड़ा ट्रेंड पिक हो रहा है बैंक निफ्टी में। अगर हम ये जो प्रीवियस हाई है 59,850 59,860 का, उसके अगर हम ऊपर जाते हैं तो हो सकता है हमें थोड़ा और पुल बैक एक्सटेंड होते हुए देखने मिले टुवर्ड्स 59,950 60,000 लेवल्स। हो सकता है शायद इंट्राडे में एक पुल बैक देखने को मिले, या रिलेटिवली अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इंट्राडे बेसिस पर, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम जाते हैं 59,730 59,710, देन हो सकता है हमें एक इसके बाद फिर से एक फॉल देखने को मिले बैंक निफ्टी में। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई फील ये 6500 इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर 6500 के ऊपर जाता है तो हो सकता है शायद हमें और स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिले बैंक निफ्टी में। नीचे की तरफ अराउंड 59,300 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक 59,300 टूटता है तो हो सकता है शायद हमें थोड़ा प्रेशर देखने मिले, बट बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और वही है थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स में एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स का इतना पार्टिसिपेशन है नहीं एज कम्पेयर टू द पीएसयू स्पेस योर। Now, if you look at the heat map, now look at this. ICICI Bank is down around 3%, जो कि एक मेजर हैवीवेट है। ये एक इकलौता प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो जिसका ट्रेंड एकदम स्ट्रॉन्ग था, वो भी अराउंड 3% नीचे है। आई थिंक दैट इज गॉट टू डू विद द फैक्ट दैट उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था। HDFC इज डाउन 0.42%, सो क्लियरली आपका जो टू हैवीवेट्स है बैंकिंग हैवीवेट्स, उसमें बिल्कुल भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। रिलायंस, अगर आप रिलायंस का चार्ट पैटर्न देखोगे इट्स प्रेटी मच सिमिलर टू निफ्टी का पैटर्न। ये निफ्टी का पैटर्न है, अगर आप रिलायंस देखोगे, रिलायंस ने भी आज इसका चार्ट स्ट्रक्चर और वीक हुआ है रिलायंस का। सो रिलायंस ने ऑलमोस्ट उसका 200 डे ईएमए ब्रेक कर दिया यहाँ पे, मतलब काफी टाइम से 200 डे ईएमए के ऊपर था। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4-5 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा था, एंड क्लियरली अभी रिलायंस हैज गॉन डाउन। आई थिंक इसके कारण आज मार्केट्स प्रेशर में, बिकॉज आपका जो मेजर हैवीवेट आईसीआईसीआई रिलायंस ऑलमोस्ट 3% के ऊपर नीचे है। सो जब भी आपका हैवीवेट काउंटर्स नीचे होते हैं तो ओवरऑल मार्केट्स को सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड ओएनजीसी इज डाउन 1.68। आईटी इज रिलेटिवली मिक्स्ड, अगर आप देखोगे टेकेम एचसीएल टेक ये दो नेम्स है जिसमें स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, बट विप्रो अगेन रिजल्ट्स के बाद ऑलमोस्ट 7.5% नीचे है, एटर्नल 3% नीचे है। सो क्लियरली आपके न्यू एज कंपनीज में भी प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ है। ऑटो रिलेटिवली अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स देखोगे 3% नीचे है, मारुति इज ओनली पॉजिटिव 1.68% हायर। एफएमसीजी में भी बारिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर, नन ऑफ द अदर सेक्टर्स आर शोइंग गुड ट्रेंड्स। मेटल में भी रिलेटिवली अगर आप देखोगे इंडाल को छोड़ के बाकी कोई काउंटर्स में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। इंडिगो आज 3% ऊपर है। आई थिंक कोटक बैंक इज अप 2.5%, सो आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में कोटक इज, बट कोटक काफी दिनों के बाद एक पुल बैक का नजर आया, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है कोटक का।
हेल्थ केयर स्टॉक्स देखेंगे तो क्लियरली मैक्स हेल्थ इज डाउन 2%, अपोलो हॉस्पिटल्स इज डाउन अराउंड 1% ईयर, अदानी पोर्ट्स भी 1.7% नीचे और भारतीय एयरटेल भी फ्लैट है. आई थिंक मेजर रीजन आज मार्केट का दैट इज आईसीआईसीआई, रिलायंस एंड योर विप्रो विच इज डाउन अराउंड 3% ही, जिसके कारण आज एक स्ट्रॉन्ग आपको प्रेशर दिख रहा है. बट अगर आईसीआईसीआई रिलायंस में अगर बाइंग आती है तो हो सकता है थोड़ा उम्मीद होगी हमें थोड़ा पुल बैक मिले, बट जब तक ये काउंटर्स में बाइंग नहीं आता तब तक आपका ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो वीक रह सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स, अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें, सो लाइक आई सेड पीएसयू बैंक एक सेक्टर है जो कि जिसका ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है. मेटल में भी एक स्ट्रांग ट्रेंड्स आपको नजर आ रहा है. कैपिटल मार्केट स्पेस जैसे स्टॉक्स लाइक 361 वैम, आपका एमसीएक्स हो गया, बीएसई हो गया, ये सारे काउंटर्स में अभी भी मोमेंटम है. आईटी, देयर आर सर्टेन पॉकेट्स ऑफ आईटी दैट आर डूइंग वेल, लाइक आई सेड टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक. बट सेक्टर्स दैट आर नॉट डूइंग वेल, रियलिटी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 3.7% नीचे है. हेल्थ केयर स्टॉक्स हमने देखा, मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स. फार्मा काउंटर्स भी अगर हम देखेंगे तो रिलेटिवली नीचे है. इंडिया डिफेंस डिफेंस काउंटर्स में भी कुछ मोमेंटम नहीं है. हालांकि ये जो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, वो बजट के पहले चर्चे में रहते हैं बिकॉज इसमें कुछ तो न्यूज हमें सुनने मिलता है, डिफेंस हो या रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो सारे जो काउंटर्स है वो रिलेटिवली वीक है अभी भी. But I think the strength lies with PSU, metal, and your capital market, as well as your IT counters here. Barring this, none of the sectors are relatively doing well. I'll come to the RRG graph now. Let me look at the key sectors to watch. अगर हम sectors नहीं stocks की बात करें जिसका positive price action structure है, एक है आपका टेक महिंद्रा. Like I said, not all the IT counters are doing well. But then there are select IT stocks like टेक महिंद्रा. अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला था प्रीवियस हाई का, और अर्निंग्स के बाद अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मूव भी मिला है आज हमें. सो इट इज एट नियर अबाउट 1730, और ये इसका जो प्रीवियस हाई है उसी के आसपास अब चल रहा है. अगर दिस इज योर प्रीवियस हाई ऑफ 1733, अगर ये भी पार कर देता है तो हो सकता है हम शायद और ऊपर जाए, एंड मे बी वी कैन एक्सपेक्ट टेकएम टू मूव टुवर्ड्स 1810 लेवल्स इन दी शॉर्ट टर्म. और जो आज का ही लो होगा 1680, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा स्टॉक के लिए. दूसरा स्ट्रॉन्ग काउंटर है आईटी स्पेस में, वो है आपका एचसीएल टेक. एचसीएल टेक ने भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, आरएसआई 60 के ऊपर है. तो आई थिंक जब तक ये 1680, इसका भी 1680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक एचसीएल टेक 1680 होल्ड करता है, और हो सकता है कि चांसेस है कि इवन एचसीएल टेक कैन कीप मूविंग हायर. सो आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक ये दो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स लग रहे हैं. अगर हम पीएसयू स्पेस की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक में काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है. तो इसका प्रीवियस हाई था अराउंड 43. टुडे साउथ इंडियन बैंक इज अप अराउंड नियरली अबाउट 3%. अगर आप देखोगे एडीएक्स भी थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश स्ट्रेंथ है. MACD लाइन इज वेल अबाउ द जीरो लाइन. सो जब तक ये 43 के ऊपर होल्ड करता है, आई थिंक द ओवरऑल ट्रेंड इज लाइकली टू बी पॉजिटिव फॉर साउथ इंडियन बैंक. बट अगर ये 43 के नीचे आ जाता है तो हो सकता है ब्रेकआउट आपका फेल हो जाएगा और हम नीचे की तरफ आ जाएंगे. अगेन जो दूसरा स्टॉक है पीएसयू स्पेस में, वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया. अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें सो क्लियरली बैंक ऑफ इंडिया में भी एक ब्रेकआउट आया है. सो प्रीवियसली अराउंड 150 टू 153 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए. और अगर हम देखेंगे ब्रेकआउट के साथ हमें वॉल्यूम्स में भी एक सर्च देखने को मिला है. या साउथ इंडियन बैंक इज, या सॉरी, साउथ इंडियन इज प्राइवेट, यू श्योर? पता नहीं, it's not public. Okay, South Indian Bank is private. Okay, then I'll so my bad. I think South Indian Bank private है ना? Sure है क्या? Let me check. हाँ, okay, it's private bank. Okay, perfect. So I stand corrected. Thanks for correcting me. So South Indian Bank again, it's a private bank, but Bank of India again, देख volumes के साथ यहाँ पे surge हुआ है. So around 153 is a strong resistance for the stock, and as long as it stays above 153, chances are that even Bank India can keep moving higher. Apart from that, there are a couple of pockets of pharma space that are doing well. One is Torrent Pharma. अगर हम Torrent Pharma की बात करें तो Torrent Pharma ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 3900 का, फिर वहां से हमें एक रीटेस्ट भी मिला था अराउंड 3890.
वही लेवल पे रीटेस्ट लेके अब फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नजर आया है टोरेंट फार्मा में. So I think Torrent Pharma can keep moving higher. अगर आप देखोगे Torrent Pharma has been holding on to its 20-day EMA जो red line है, that is your 20-day EMA line. And as long as it stays above 3,930, 3,950, the trend is likely to be positive for Torrent Pharma as well. Apart from that, even JB Chem Pharma में भी similar structure है. यहाँ पे breakout हुआ था, retest आया था, retest के बाद फिर से एक up move देखने को मिला है. एंड JB Chem Pharma भी अगर आप देखोगे जो 20-day EMA उसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है यहाँ पे. And as long as it stays above 1865, 1870, then chances are that even JB Chem Pharma is likely to move higher. One name from the capital market space I would say is 361 WAM. 361 WAM क्या हो रहा है ना, यहाँ पे downward sloping trend line breakout मिला है हमें. But there are multiple resistance in this 12, 15, 12, 20 zone. अगर आप देखोगे multiple times ये stock ने कोशिश किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बट ये जो 1220, 1215 का जो लेवल है, ये जो जोन है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कोशिश किया है, बट जब भी ये 1220 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, then chances are that even 361 WAM can keep moving higher. But it needs to be above 1,170. That is where the 20-day EMA is, and that is likely to act as a strong support for the counter. And the last stock that I want to discuss is Navin Fluorine. Navin Fluorine is probably on the verge of a breakout. Because अगर हम नवीन फ्लोरिन देखें, so clearly एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस था, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस है, ये आपका चौथा रेजिस्टेंस है, ये आपका पांचवा रेजिस्टेंस है. अगर आप देखोगे ये वाला जो जोन है 6,170, 6,200, इसको सक्सेसफुली पार नहीं कर पा रहा है नवीन फ्लोरिन. ऑलमोस्ट 5 times यही जोन में यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है. बट द मोमेंट वी गेट अ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबाउ 6,200 विद वॉल्यूम्स, then chances are that Navin Fluorine is likely to do well in the coming sessions here. Now, so that was about the mid-market session. Now coming to the small setup, जो जिसने हमने last week से start किया था कि हर दिन एक मिड मार्केट में towards the end, before I take your question and answers, मैं आपको एक छोटा concept सिखाऊंगा. So today we will learn about a small concept, एकदम easy concept है, that is about trends. So ट्रेंड्स के बारे में हम जानेंगे. पिछले सेशन में हमने कैंडलस्टिक के बारे में देखा था. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स यूजुअली. एक होता है आपका अप ट्रेंड, एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, और एक होता है आपका साइडवेज ट्रेंड बोलो, या आप इसको रेंज बाउंड बोलो, या आप इसको कंसोलिडेशन बोलो. इट्स ऑल वन एंड द सेम. नाउ अप ट्रेंड में क्या होता है ना, द प्राइस मूव्स अप लाइक दिस, वेयर दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई, ये आपका लो है, ये आपका लो है. तो आप देख सकते हो प्राइस इज मूविंग इन अ हायर हाई, एंड द सेकंड लो इज हायर देन द फर्स्ट लो, थर्ड लो इज हायर देन द सेकंड लो. इट इज मूविंग इन अ हायर लो फॉर्मेशन. तो जब भी कोई स्टॉक एक हायर हाई में जाता है, एट द सेम टाइम उसका लोअर भी हाईज है, व्हेन इट मूव्स इन अ हायर हाई, हायर लो, HH स्टैंड्स फॉर हायर हाई, HL स्टैंड्स फॉर हायर लो, तब जाके हम बोलते हैं कि वो स्टॉक वो अप ट्रेंड में है. सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जब हो तो प्राइस कीप्स मूविंग लाइक दिस. अगेन दिस इज अ हाई, और ये आपका हाई है, ये आपका हाई है. अगेन दिस इज अ लो, दिस इज अ लो. सो व्हेन द स्टॉक्स मूव्स इन अ लोअर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन, द सेकंड लो इज हायर देन द फर्स्ट लो, so that is called as lower low. The second high is lower than the first high. This high is lower than this high here, so this is called as lower high. So whenever the stocks move in a lower low, lower high formation, उसको हम बोलते हैं that the stock or an index is in a downtrend. And what is a sideways range bound consolidation? जब neither आपका higher high बनता है ना आपका lower low बनता है, where the price trades in a range. मतलब ना तो इसमें higher high है और ना तो इसमें लोअर लो है. तो जब स्टॉक ना हायर हाई बनाता है ना लोअर लो बनाता है, वो ट्रेंड को हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड. सो मेजरली आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, कोई भी चार्ट देख लो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज टू सी व्हाट इज द ट्रेंड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स. अगर एक हायर हाई हायर लो है, देन यू कैन से दैट द स्टॉक और इंडेक्स इज इन एन अप ट्रेंड. अगर एक लोअर लो लोअर हाई है, तो वी से दैट द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड. And when there is neither a higher high, neither a lower low, where the stock moves in a range, or the stock moves sideways, or the stock moves in a consolidation phase,
that is when we say that आपका जो फेस है उसको हम sideways range bound या consolidation trend या range बोलते हैं. So this was the small learning for the day. Now that was about today's bit market session, guys. I hope it was informative. And now let us start off with our question and answer session. If you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box, and I'll be happy to listen to them. Ganesh ji, nahi Dixon avoid karna Ganesh ji, because clearly iska dekho trend down hai. ये देखो lower low lower high formation से आ रहा है, so clearly avoid it. Not a right time to buy. Between IIFL and Mahindra and Mahindra Finance. Between the two, I feel IIFL is better placed. I think IIFL ka chart is also positive. I think you can continue to hold with around 600, 605 as an SL. Between DMart and I think Bank of India is, like I said, we discussed Bank of India here. Bank of India, you can continue to hold with around 153 as an SL. Goes for Pramod ji as well. So Bank of India is better. Hotels avoid karna Manoj ji, because both अगर आप ITC hotels भी देखोगे डाउन ट्रेंड में है, इंडियन होटल्स भी देखोगे तो वो भी डाउन ट्रेंड में ही है. सो क्लियरली अभी टूरिज्म सेक्टर ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना. टेक महिंद्रा इज गुड सुमित जी, आप यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड. आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी मिला है. आई थिंक एक 1680 का एसएल सपोर्ट लेके आप होल्ड कर सकते हो. हरीश जी इज आस्किंग टाटा मोटर्स विच वन हरीश जी, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स? If you look at Poonawalla, I think wait till 500 gets taken out on the upside. I think once 500 is taken out, then chances are that thoda trend improve हो सकता है. TFCI Limited काफी choppy है इसका trend. I think if you are holding, then probably consider around 59 as an SL, 59 या 60 आप SL रख सकते हो. अच्छा, you got it at 68. Then consider around 62 as an SL. वरुण जी, आप 62 as an SL रख सकते हो इसमें. या अगर आपको थोड़ा और ऊपर रखना है तो मे बी अराउंड 63 64 के आसपास. बट आई थिंक इफ इट ब्रेक्स बिलो 62, देन चांसेस आर दैट इट कैन गो डाउन इवन फर्दर. IFCI is good. Maybe you can around 56 as an SL. You can consider your TFCI का टारगेट कहाँ तक आ सकता है. मे बी इसका प्रीवियस हाई तक मान लो, मे बी अराउंड 75. इसका प्रीवियस हाई एक 75 और 76 के आसपास है. सो टेंटेटिवली अराउंड 75 76 आप पकड़ के चल सकते हो. जिंदाल स्टील क्लियरली थोड़ा सा चॉपीनेस है जिंदाल स्टील में. मे बी आई फील जब तक 1100 इज नॉट टेकन आउट तब तक ये साइडवेज ट्रेंड रह सकता है. बिकॉज आप देखोगे इट्स मूविंग इन अ साइडवेज ट्रेंड. But if you are already holding, then maybe around 1000 का SL रख के आप hold कर सकते हो. So central government has done good reforms. According to estimates, government receipts are low, which may lead to low capex. In such, will there be any momentum? Very difficult, because usually you will see stocks like railways, infra and defense react before the budget. But we have not seen anything of that sort. Initially, due to some order wins in certain railway stocks, we saw railway stocks were in momentum. Even infra stocks, again, we'll have to wait and see. I think वो budget के बाद ही we'll have more clarity as to whether the market is reacting positively to the announcements there. Oh, sorry, TVS Motors you're talking about. Sorry, my bad. If I look at TVS Motors, wait for some reversal sign. Wait until it gives a close above 3725 3730. Maybe around 3630 is where you can. But wait, थोड़ा एक strong bullish candle आना, तो भी थोड़ा profit booking चल रहा है auto space में. Wait for some reversal signs, Harish ji. I think maybe about 3730. Ujjivan is good. I think you can consider with around 57 as an SL. 56.5 57 आप इसको होल्ड करके रख सकते हो. JSW Infra
See, एकदम bottom reversal hai. I think too early to call it as a reversal, but I think if you are holding, then consider the previous low. I think 255 as an SL आप hold कर सकते हो. Because ये फिर से अगर ये 255 के नीचे जाता है तो हो सकता है शायद इसमें फिर से आपका सेलिंग एक्सेलरेट हो. सो फिलहाल के लिए होल्ड विद एन SL of 255. Axis Bank. Okay, let me look at Axis Bank. Axis Bank, see, you can maybe consider around 1270 as an SL. 1270 can be a good SL for Axis Bank here. Nifty view, I think overall bearish ही लग रहा है आज. से लग तो नहीं रहा है कि see, I feel if it breaks below the day's low, that is around 25,490, then we can expect more downside. On the upside, I feel maybe around 25,600. You can consider 25,600 as a resistance, but जब तक 25,600 पार नहीं होता है तब तक don't be aggressively long. I think 25,490 is where the support is. If it breaks below that, then we can expect more downside. If you look at Varun Beverages, see, it is improving, but I feel we need a breakout above 510, 515. If we get any breakout above that, then chances are that it can move higher. But for now around, you can consider having 485 as a strong support. Nalco is National Aluminium, right? So National Aluminium, I would say avoid fresh entry at the current level because it's already gone up a lot. But if you want to take a chance, maybe take a chance with less quantities if you feel so, but don't be aggressively longs now. But I think around आप 350 का SL रख के आप कर सकते हो आज. But I think, see, it's not advisable to buy at this level because the price has already gone up a lot. Canara Bank is good. I think, like I said, the overall PSU space is doing well. I think any breakout above 160 is likely to be positive for Canara Bank. Pramod ji, yeah, UPL positive है, needs to hold above 775, but I think इसका एक strong level ये भी है आपका 810 के ऊपर अगर move आता है, then हो सकता है that it can move up even higher. Gravita budget stocks, we'll have a session on that. Usually on the budget day itself, our fundamental team will have a session on the budget beneficiary stocks. Gravita avoid karna because it's already in a downtrend. It's better to exit. Better to avoid Gravita for now. Clearly, the structure is down. BHEL, you are saying BHEL be avoid hi karna. I think if you are holding, then around maybe 250 to 253 ka SL आप रख सकते हो, but avoid fresh entry in BHEL for now. You can hold until 253. Below 253, it's better to exit. Suzlon avoid karna because the chart structure is not great. Clearly, it's in a downtrend. I think avoid Suzlon for now. Netweb, I think wait for a good close about 3,460. अगर 3,460 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज मिलता है, यहाँ से फॉलो थ्रू मिलता है, देन इट्स गुड. बट इफ इट ड्रॉप्स बिलो 3,460, देन हो सकता है थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले. डीमार्ट अवॉइड करना फिलहाल के लिए. Which stock is this? Matrix Tech. I don't know which stock is that. The DMart avoid, it's in a downtrend. मीडियम टर्म, लाइक आई सेड, निफ्टी जब तक 25,900 के हम नीचे है तब तक ओवरऑल ट्रेंड इसका साइडवेज टू बेरिश ही होगा. बिलो 25,490, then chances are that we can drop even further. So below 25,900 we will be sideways to bearish. Below 25,490 bearish. But till the time it stays in a range, हो सकता है शायद हम रेंज में ही रहे यहाँ पे. Electro steel castings. Too early to call this as a reversal. Maybe around see, if you are holding, then maybe around 67 का SL रख के आप होल्ड कर सकते हो. बट आई थिंक ये 82 के ऊपर जाना चाहिए, इसके बाद जाके थोड़ा इसको मोमेंटम मिल सकता है. Sachin ji, sir, one session on budget related. We are making videos on that, Sachin ji. क्या होता है deficit, fiscal deficit, revenue and expenditure. We'll be soon making
We are in the process of making videos, so you will find that on Instagram channel and also on our YouTube channel as well. So keep following those channels as well. Hensing, see, better to book some profits in Hensing because it's already run up a lot, and maybe you can trail the remaining to around 635, and maybe you can book around 70-80% positions in Hensing because काफी strong rally आ गया metals में. Same for Vedanta as well. Even Vedanta, you can book some profits and trail the remaining to around 660, 665 के आसपास. And the same goes for GMDC as well. GMDC, I think you can hold until 535. That is your 100-day EMA. If it falls below 535, then it's better to exit. M-Sumi, avoid. Clearly, the chart structure is weak in M-Sumi. Motherson में भी थोड़ा सा weakness है. I think ये 111 के नीचे ड्रॉप होता है, then chances are that थोड़ा और fall हमें देखने को मिले मदरसन में. So better to avoid both Motherson and Motherson Sumi as well. Clear, guys. Also, one important TMCV is good. TMCV you can continue to hold if you're holding. I think around 423, 420, 423 is a strong support for the stock. And also one important announcement, guys, we are having a webinar today at 4 o'clock. It is going to be on trading psychology and trading biases. Do attend that, guys. It is going to be a fun session, interesting session hoga, zyada heavy nahi hoga. But I think if you are someone who takes a lot of decision on an emotional basis, I think that is one session that you need to attend today. So that is happening today at 4 o'clock. I am doing the session and it will happen on SBI Securities YouTube channel. Yes Bank, I can't give a view on Yes Bank due to compliance, Somenji. Yeah, Tata Motors, good. I think you can maybe wait until a breakout above 450 in Tata Motors CV commercial vehicles. I think any move above 450 is likely to be positive, with around 425 acting as a strong support. Okay, so I guess that's all from today's ICICI AMC. Okay. You can continue to hold. I think 2830, 2850 का आप होल्ड करके रख सकते हो. Nuama, wait until 1510 is taken out. I think any above 1510 is likely to act as a good trigger for the stock to move higher. Emotions is a part of stock market. I hope I'm right. Yeah, absolutely. Without emotions, as much as I tell you to control your emotions, it's very difficult, especially when you are in a trade. But that is what we'll discuss, how you can control your emotions, what are certain things that you can take care. So there'll be a session on trading biases. So that is happening today at 4 o'clock, guys. So I'll see you in a couple of hours. Until then, take care. Stay safe, guys. And I'll see you at 4 o'clock. Until then, bye, guys. Take care. See you.